नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पे बहुत घमासान मचा। बहुत 2 दिन तक तो पार्लियामेंट में बहस हुई, देर देर रात रात तक बहस हुई, फिर इस कानून को पास किया गया, फिर राष्ट्रपति महोदया ने इस पे हस्ताक्षर कर दिया, अब ये कानून बन चुका है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब बात ये है कि इस कानून को लेके विपक्षी दलों ने अदालत का रुख किया है, कोर्ट का रुख किया है। और लेकिन अब इससे प्रश्न ये उठता है कि संसद के दोनों सदनों से पास हुए कानून और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भी क्या किसी कानून को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? इस पर हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए उदय इंडिया के लीगल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू समझाइए कि जो संसद के दोनों सदनों से कानून पास हो गया, राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर भी हो गए, फिर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, क्या ये मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तकनीकी रूप से ये सही है या मतलब ये हो सकता है? You see, the most important fact that we are governed by a rule of law. Now, the duty of the Parliament is to enact laws. They debate, there is a procedure prescribed, they have to adopt and they promulgate law. When the President of India gives his assent, then it becomes a law. On application, notification then comes. Now, question remains that once the law is passed, whether it can be challenged or not. You see, in the history of India, there are many laws. Those have been enacted by the Parliament, and it has come to the corridors of the court, and the Supreme Court and High Court are competent to test the law with that of the Constitution. If a law violates the basic structure of the Constitution or that a constitutional principle, then it can be questioned, though it is very limited, because a judge who takes oath, he takes oath to uphold the law, not to challenge the law. When the matter comes, he will try his level best to protect it. That's the decisions or that in the meantime, in the 75 years of history of India, we have. But when it is raised such questions which cannot withstand, because it violates the basic principles of the Constitution, then they declare it ultra virus. महोदय, हम लोग भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की ओर देखें, जो लीगल हमारा सिस्टम है, उसके हिसाब से जो संसद है वो कानून बनाती है, एंड द कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ लॉ। कोर्ट के बारे में कहा जाता है The Supreme Court is the guardian of the Constitution. गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में जब संसद ने कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट का उस पर दखल देने का अधिकार बनता है क्या? नहीं, there are two courts. Those are constitutional courts. Constitutional is court of record. Those are high courts and the Supreme Court. If the law is in derogation of a fundamental right which is guaranteed in the Constitution, then the Supreme Court or the High Court can test that validity of that law. It's okay, but it's not that easy. You know, when such things comes to before the court, as I told you, when if you a judge before becoming a judge, after the appointment, he takes oath. What is that oath? That's written that I will uphold the Constitution and the laws. So laws in derogation of the Constitution cannot remain valid in this country. Okay, so that is to be tested. That is to be tested. In my view, you know, in NJSC case, judges appointments case, what happened? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। In that case, there was a constitutional amendment. There was also a act in place. Both of them were declared invalid, and Supreme Court even didn't read on, because the power of a court, constitutional court, it can read on particular provision. It can interpret a particular provision. They are the interpreters of the law, but within the four corners of the Constitution.
Neither the judge can go beyond the constitution nor the parliament can go beyond the constitution. That is how the check and balance is maintained. It's not that it's said that once the some orders, some acts are passed, any judge can throw it out or declare it ultra vires. No, it cannot. So there is a Supreme Court being the guardian of the constitution or the last interpretive, because in constitution there is a power lies with the president to refer for advice of the Supreme Court. जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल सरल शब्दों में समझा देता हूँ, जो हमारे एडिटर साहब, लीगल एडिटर साहब ने हमें समझाया कि कोर्ट कानून जो है उस पर विचार नहीं करेगा। कोर्ट ये देखेगा कि उस कानून से किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। मैं ख्याल से यही कहना चाहते हैं आप। हाँ, और एक चीज़ है, जब कभी कभी क्वेश्चन को आता है कि सपोज यू सी देयर इज ए प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, नोबडी कैन एनैक्ट ए लॉ, उसका मन मर्जी जो भी चाहेगा वो ऐसे कर देगा नहीं। ही हैज़ टू डू in accordance with the procedure laid down for the legislative policy. For each parliament, even Rajya Sabha, Lok Sabha, there is a procedure prescribed, and in each state legislature also the procedure prescribed. That has to go that. Whenever any citizen of India questions before the court that this law cannot remain or has to be declared ultra virus because it won't meet the criteria to be a law, then in that case he has to show to the court that at any cost this law cannot remain because it is in violation of the Constitution of India. तो मैं इस बात को भी सरल शब्दों में समझाता हूँ। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया होगा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। दूसरा, नंदा साहब ने हमें ये समझाया, जो कि बहुत सीनियर लॉयर भी हैं उड़ीसा हाई कोर्ट में, उन्होंने हमें ये भी समझाया कि कोर्ट एक और कंडीशन है इसमें कोर्ट दखल दे सकता है, वो ये है कि किसी भी कानून को पास करने में उचित कानूनी प्रक्रिया का, उचित कानूनी मानदंडों का पालन, उचित पैरामीटर्स का पालन किया गया है या नहीं। तो इन दो मुद्दों पर, कि पहला तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, दूसरा कि इस कानून को पास करने में सभी मानदंडों का, कानूनी पैरामीटर्स का पालन किया गया है या नहीं, इन दो मुद्दों पर कोर्ट विचार करेगा। इस आधार पे इस मामले को अदालत में सुना जा सकता है। तो इन दो मुद्दों के अलावा और कोई मुद्दा बच रहा है सर हमारे पास? नहीं, बेसिकली ए लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस if it follows the basic structure principle of the constitution. तो जैसे कि पार्लियामेंट में कोई एक लॉ बनेगा कि which is affecting the sovereignty of India or integrity of India, that also can be challenged. But basically the citizens, now who will go? A body of persons or a person? Even a simple citizen also can challenge the law, saying that this is what happened. So these are the very limited powers of the court which can test because they are there to protect the law, not to see that the law is declared ultra virus. It's the last resort for a judge. बिल्कुल, आपने सरल और आसान शब्दों में समझाया। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो लाया गया वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत लाया गया। पहले इसको जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया, उस पर कई महीनों तक विचार हुआ, उसके बाद इसको संसद में लाया गया, फिर लोअर सदन जो है हमारा लोकसभा उससे पास कराया गया, फिर हायर सदन या राज्यसभा से पास कराया गया, फिर राष्ट्रपति ने इस पर वो किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट का ध्यान इन सारे मुद्दों पर रहेगा। तो मानदंडों वाली बात तो पहली नज़र में देखा जाए तो खरी उतरती है, क्योंकि हमने वोटिंग भी पूरी तरह से देखी। संसद में वोटिंग मतलब पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े थे, विपक्ष में कम वोट पड़े थे। अब दूसरा मुद्दा जो बचता है मौलिक अधिकारों का, उस पर अदालत विचार करेगी। तो इस मुद्दे को फिलहाल हम यहीं समाप्त करते हैं। बस हमारा जो भ्रम था वो दूर हो गया कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कानून को चुनौती दी जा सकती है नहीं। तो नंदा साहब ने समझा दिया कि चुनौती दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ दो मुद्दों पर, एक तो मौलिक अधिकार, दूसरा कि लीगलिटीज़ वाला मामला। तो मैं उम्मीद करता हूँ दर्शक इस बात को समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।